No gold is not in her. She's a Okay, so I'm just going to take you through a bunch of pictures that will show you how I kept changing and evolving the look. प्रोडक्ट फोटोग्राफी में बहुत सारी पिक्चर्स लेनी पड़ती हैं, हर चीज़ को ट्राई आउट करना पड़ता है कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, किस तरह चीज़ पोजीशन की हुई है तो वो सही लग रही है, या उसके साथ और कोई चीज़ ऐड करनी है फ्रेम के अंदर, या सिर्फ वो जो प्रोडक्ट आप शूट कर रहे हैं सिर्फ वो रखना ज़रूरी है. तो आई शो यू सम ऑफ माई पिक्चर्स जो आपको बताएगी कि किस तरह आई केप्ट ऑन चेंजिंग एंड इवॉल्विंग द लुक ऑफ माई प्रोडक्ट. So just to start off here, वेरी फर्स्ट पिक्चर जिसको टेस्ट शॉट बोलते हैं, कि आप उसमें चेक करते हैं आपकी लाइटिंग सही है, आपको कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, रिफ्लेक्शंस एंड व्हाट नॉट. तो पहले मैं आपको सारी पिक्चर्स दिखा देता हूँ कि किस तरह चीज़ें चेंज हुई टू गेट द परफेक्ट पिक्चर. उसके बाद मैं आपको अपनी लाइटिंग ब्रेकडाउन भी दिखाऊंगा. सो फर्स्ट लेट्स गो फ्रॉम हियर. द वेरी फर्स्ट पिक्चर जिसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, और पीछे की बैकलाइट है सिंपल. तो प्रोडक्ट यहाँ पे रखा हुआ है सिंपल, बिल्कुल प्लेन सी पिक्चर है, कोई अच्छी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है. सो आई विल जस्ट गो थ्रू दीज पिक्चर्स एंड शो यू. तो ये बिल्कुल प्लेन पिक्चर्स हैं, नथिंग मच हैपनिंग. फिर मैंने बोला कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, सिर्फ बॉटल रखी हुई है. तो सो आई थॉट आई वुड जस्ट ब्रिंग इन अ ग्लास एज वेल. फिर ग्लास के साथ मैंने थोड़ा ट्राई आउट किया इफ़ इट्स आई कैचिंग या थोड़ा अच्छा लग रहा है. इट वॉज गेटिंग दैट, थोड़ा इम्प्रूव होता जा रहा है एवरी फ्रेम में पिक्चर प्रोडक्ट का लुक. बट एज यू कैन सी आई ट्राइड सो मैनी डिफरेंट शॉट्स, ग्लास को करीब करके, दूर करके, आगे पीछे, हर तरफ से. और उसके बाद आई थॉट ग्लास एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ग्लास के अंदर कुछ होना चाहिए तो लगे कि यू नो इट्स दैट ड्रिंक. उसके बाद मैंने उसमें ड्रिंक भरा. उसके बाद मुझे लग रहा था कि यार अभी भी बहुत प्लेन लग रहा है, सिंपल लग रहा है, इट्स नॉट आई कैचिंग. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इट्स जस्ट प्लेन बॉटल. फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया कि अगर इसके ऊपर थोड़े से ड्रॉपलेट्स हों तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, थोड़ा टेबल पे भी मैंने ड्रॉपलेट्स डाले हैं, थोड़े बॉटल के ऊपर हैं और ग्लास के ऊपर भी हैं. तो जो ये वाले हैं टेबल के ऊपर, इसके ऊपर जब लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी तो काफ़ी अच्छा बोके इफेक्ट आ रहा था और थोड़ा आई कैचिंग लग रहा था. But then I decided to crop or go more kind of zoom in towards the product, because this is the most important thing that we have to capture. उसके बाद आई kept on taking some pictures. थोड़ा मैं चीज़ें देख रहा था कि और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं. तो उसके बाद थोड़ा लाइटिंग चेंजेस एंड ट्वीक्स. देन फाइनली आई थॉट कि नहीं यार, ये सिंपल पानी जो इसके अंदर है रखा हुआ बॉटल के साथ मज़ा नहीं आ रहा देखने में. इट्स स्टिल खाना सिंपल, थोड़ा कुछ क्रिएटिव होना चाहिए. देन आई थॉट कि यार इसके अंदर ट्राई करते हैं कि ऊपर से पानी डाल रहे हो. फिर उसके बाद मैंने एक आध दो शॉट्स उसके भी ट्राई किए पानी डालते हुए, मोशन कैप्चर टाइप. बट उसमें भी या ओके लग रहा था. बट देन आई थॉट टू डू दिस के साथ ही उसके अंदर पिक्चर के अंदर ही उसमें ऐसा लग रहा है कि यूर पोरिंग दैट. So I tried that, and luckily just one shot and I was like, this is the perfect picture. That's what I'm looking for. And ये वाली पिक्चर बिल्कुल ही प्लेन लग रही है. इट्स जस्ट सो प्लेन कि इसमें कोई कलर्स नहीं है, सैचुरेशन नहीं है, नो शार्पनेस, नथिंग. इट्स जस्ट लाइक ऑलमोस्ट ब्लैक एंड वाइट काइंड ऑफ पिक्चर. क्योंकि इन कैमरा आई कीप ऑल माई सेटिंग्स एट ज़ीरो. द शार्पनेस, वाइब्रेंस, saturation, contrast, everything I put to zero, because I know I will be going back and doing color corrections, doing some editing in the picture to make it look more eye-catching. That's all product photography is all about, just to grab that attention, that eyes go on that product. So I do everything, most of the color correction in post. So from this is how the picture came out. तो अब चलते हैं. I will just show you a quick comparison. Okay, so from here, this picture turned out this way finally. And this one you can see okay, plain colors and no saturation.
जो है टेंट भी नहीं करा हुआ कुछ. इट्स जस्ट रियली सिंपल, बहुत ही नॉर्मल सा लग रहा है, इतना कोई आई ग्रैबिंग नहीं है, अटेंशन कैचिंग नहीं है. So this is that on the right, and then on the left you can see how the picture finally turned out to be. Okay, now I am going to take you to my lighting breakdown here. So for this, what I did was, अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करे हैं, क्या कैमरा यूज़ किया है, क्या कैमरा सेटिंग्स यूज़ की हैं. I'll show you everything. Okay, for this picture, कहाँ गई ये रही. So for this picture, what I used for my settings was, oh, इधर नहीं आएगी, sorry, not that. Okay, so you can see it's shot on Canon 60D, which is a semi-professional camera. It's not that hi-fi. I always shoot product photography on lowest ISO possible because you don't want those grains, no noise you want. And then I try to go higher on the f-stop because you can always go back and blur as much as you want in post. But अगर कोई चीज़ blur capture हुई है, then you cannot, have it sharpened in post. And here's my exposure because I was trying to capture the flowing water. I went to 200th of a second, and then exposure I always keep manual, no flash because I was using continuous lights, and then and then focal length was 50 mil because you want that good depth of field. Okay, so what I was using and how I captured this picture, I will show you. I will go through that now. So what I used here was a soft silk, you can call it, a diffusion, जिसका आप यहाँ पे shadow भी देख सकते हैं, reflection आ रहा है. So what I did is I used two 650 watt lights. Okay, two 650 watt lights. Pardon my drawings here, but it's just really simple to show you what the rough studio looked like. So 650 watt lights. Okay, so that would be about 1300 watts continuous lights through a silk diffusion, and then it was shining right here. You can see the reflections, all of it. Okay, and then what I had here was a 2x4 bounce board, जिसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है हल्का फुल्का. So I had a 2x4 bounce card, जो कि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा था और यहाँ पे भेज रहा था. ठीक है, उसके बाद this is just a simple table. ठीक है, उसके ऊपर ये बॉटल रखी हुई है और ग्लास रखा हुआ है. ठीक है, and then about the background. So what I did with the background is that I threw a light facing upwards on the wall, so it looked something like that. Okay, it was on a baby stand with a green filter, a gel, okay, which was throwing this halo kind of thing, and it was put on spot mode. This one was on spot, these were on flood mode. So what flood and spot is, a spot is just like a spotlight. तो ये जो इसका बिल्कुल छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है जो कि सारी लाइट एक ही स्पॉट पे थ्रो कर रहा है, that's called a spot. And flood is, what flood does is that it broadens the angle or the beam of the light. It doesn't shorten down to a certain point, it just
widens the angle तो light हर जगह जाए. This is pretty much it. And then I will also go into Lightroom and show you what settings I kept and how that picture changed. But for lighting, this was pretty much it. So yeah, just two 650 watt tungsten lights, main key light that you can call, and then fill was just my bounce board over here on the left, and then my background light was just here, shining as a spotlight on the wall, just to create that separation and that atmosphere light. उसके बाद I will jump in Lightroom here and show you what settings I kept. Okay, so this was the picture, which turned out this at the end. So you can see what I shot was on 4700 and the tint just shows up here anyways. तो मैंने इसको देखते हुए कि कहाँ पे बेस्ट सेटिंग लग रही है, बिकॉज आई वांट टू गेट दो सैचुरेटेड कलर्स के आप अगर स्क्रॉल कर रहे हो और अगर ये पिक्चर आपकी नज़रों से गुजरे, यू आर जस्ट गोना कम बैक एंड सी दिस. ओके, एंड देन एक्सपोजर एज आई नीडेड एट ऑलमोस्ट वन स्टॉप. अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये वाला जो मैंने लगाया था डिफ्यूजन बोर्ड हियर, दिस टेक्स डाउन रफली अबाउट 3 to 4 f stops, क्योंकि ये बहुत थिक डिफ्यूजन है तो काफ़ी लाइट सॉफ्टन करता है. इसलिए आप देख सकते हैं कि इतने कोई रफ ज़्यादा हार्ड शेडोज़ नहीं है यहाँ पे एज पे. इट्स रियली सॉफ्ट लाइट. यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं, इट्स रियली सॉफ्ट. इट्स रियली सॉफ्ट, इतना कि बस थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, विच गिव्स यू सम कॉन्ट्रास्ट इन द पिक्चर. Alright, and then contrast, if I put it there on 0, you can see I wanted that contrast, थोड़ा dark look के और ज़्यादा catchy बनाना है हमें picture को, right? And then highlights, shadows, जो भी छोटा मोटा changes होते हैं, whites, I took them down because यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा white हो रहा था, तो I took the whites down. And then of course you want those dark blacks for that look. इतना ज़्यादा change नहीं था. If you can see what was if you can see what it was on 0, and then I just took it down tiny bit, तो और ज़्यादा dark blacks हो गए. Then clarity, see how that looked, because I told you I always put all my manipulating settings at 0 in camera, because I know I will be manipulating my settings on computer in Lightroom. So clarity, you can see on 0 how it is, and then minus 40, तो थोड़ा सा वो sharp look, So what I always do, because I can see in the picture that I only have certain colors. I don't have all these different colors in the picture. I only have like green, white, silverish, bluish here, and black. So what I do is I try to take down the saturation as much as I can, so only those colors pop up which are there in the frame. कहीं का दूसरा रिफ्लेक्शन या इस तरह का कोई हल्का फुल्का कलर मुझे नहीं चाहिए पिक्चर के अंदर, राइट? So I try and take those colors down as much as I can, and then थोड़ा बहुत मैं ह्यू चेंज कर देता हूँ डिपेंडिंग कि मुझे क्या लुक चाहिए. तो थोड़ा सा ऑरेंजिश और येलोइश का मैंने ह्यू बढ़ाया है, and then saturation, and you can see in the yellow one is going down. And then if you see here on the green, मैंने उसका luminance बढ़ाया है, because if you see without that, it's kind of green. It's just simple green. But with this, I get some different kind of look in the green. It's just plain green, right? And if you see now, it's more bright and more eye-catching green, just because of the luminance. थोड़ा सा अगर मैं इसको dark कर दूँगा तो green जो है वो दब जाएगा. All it's doing here is making that green pop, so I put that on 50 here. And then aqua color मैंने थोड़ा बढ़ाया, because with green I also wanted that bluish, green bluish look. So if I go and change these to 0, you can see there's just green. But here when I bring those back, you can see थोड़ा थोड़ा जहाँ पे silverish ये जो reflections आ रहे हैं, and this bottom of the glass here,
तो वो ब्लू कलर आ रहा है यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ साइड्स पे. सो इट्स गिविंग मी दोज tiny blue colors just to bring that contrast with green. And yeah, every other thing is put on normal because यहाँ पे और कुछ है नहीं. I can take those as well. I don't know why I didn't, but doesn't really matter because purple color नहीं है यहाँ पे picture के अंदर. And then sharpening, because I put everything on zero, on settings on zero for manipulating my picture in camera, I can go and stretch the settings or stretch the pixels as much as I can because I also shoot raw. तो अगर मैं यहाँ पे full strengthen पे जाऊँगा अगर sharpening पे, तो I know कि image में pixels नहीं फटेंगे. And then because there's no noise, I don't need to play around with noise reduction. But if I did go on say 100, थोड़ा noise जो भी है वो यहाँ पे, it will just take those down. And that is pretty much it. Pretty simple setup as you saw. कि कुछ ज़्यादा इतना equipments के साथ नहीं खेला. It's just really simple, just being creative, having different ideas, just starting off with a simple bottle. You saw here कि यहाँ से लेके पूरी एक, you can say it was a journey, कि एक bottle के साथ picture लेके, and I went all the way through multiple pictures and I ended up here. So that's what product photography is all about. Just being creative, manipulative, और चीज़ें थोड़ी change करके, experiment करके, what looks good, what doesn't, what you need to change, and lighting and the mood of the picture you set. Everything really matters because that's what's going to show about the product. That's what's going to portray your product. So yeah, that's pretty much it for this video. If you liked it, comment below if you want to see more of such breakdowns and lighting tutorials. I will be bringing up more tutorials from the past pictures that I've done, but I'm also planning, once I'm done with those, I'm planning to maybe go live and do some on in studio kind of thing where I show you physically where I put my lights and you will see what I do instead of just me being sitting behind the camera and talking to you guys. But yeah, we'll get there slowly and steadily. So yeah, if you like the video, make sure you subscribe, and I will see you in the next tutorial. Bye.